Hello everyone, I welcome you all again in this lecture series of engineering mechanics. In the last 4 videos we have discussed about equilibrium of coplanar concurrent force system. From today onwards we will be discussing about equilibrium of coplanar non-concurrent force system. Okay, let me write the topic first. Equilibrium of coplanar non-concurrent force system. Non-concurrent force system. The prerequisite to understand this topic is moment. Suppose there is a force F which is acting in a positive x direction. The magnitude of force is 10 Newton. Okay. Let us suppose we have to find the moment about this point A. So from the definition of moment, we all know moment is nothing but force into perpendicular distance. Okay. Let us understand what is this force and what is perpendicular distance. In the previous lectures we have discussed that whenever we talk about a force, we talk about the direction of the force, magnitude of the force, line of action of the force and the point of application. Okay, the most important thing over here is what is the line of action of the force. You can clearly see the line of action of this force is nothing but this dotted line. Okay? This perpendicular distance is nothing but the shortest distance of that line of action. What I am telling, the shortest distance of that line of action from the point of interest. Point of interest means जिसके about आप मोमेंट लेना चाहते हो, तो ये डिस्टेंस जो होगी, दिस डिस्टेंस इज डी परपेंडिकुलर. ओके, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे किसी पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फोर्स दिया हुआ 10 न्यूटन का, ये उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और ये पॉइंट है जिसके अबाउट आपको मोमेंट लेना है इस फोर्स का, तो जो मूवमेंट होगा दैट विल बी द फोर्स दैट इज 10 न्यूटन एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस सपोज कर लो ये आपको 10 mm दिया हुआ है. ओके, तो इन दिस सिचुएशन m अबाउट a विल बी 10 into 10. ओके, 10 न्यूटन into 10 mm. Therefore this will be 10 Newton mm. Sorry, 100 Newton mm. Okay. This is unit of moment, Newton into mm or Newton into meter or Newton into centimeter depending on कि ये distance mm में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है या फिर सेंटीमीटर में दिया हुआ है. ये क्लियर है? तो ये तो हो गई बात मूवमेंट के मैग्नीट्यूड की. ओके, लेकिन मूवमेंट का मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में उसका क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है. तो इधर दिस मूवमेंट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अब जरा समझते हैं कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा ये फोर्स एक अबाउट कि एंटी क्लॉकवाइज देगा. इसको समझने के लिए थोड़ा सा एनालॉजी समझने की कोशिश करते हैं. आप कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे इसको. देखो, जनरली बच्चे जो होते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, हम कैसे समझें. तो देखो आपको कुछ नहीं करना है. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो भी है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप देखो ये लाइन ऑफ एक्शन है. यू सपोज कि आपको आप जो हो इस तरीके से फोर्स अप्लाई करो एंड यू आर टाइड विद अ स्ट्रिंग. सपोज करो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये स्ट्रिंग है जिससे आपको बांध रखा है और यहाँ पे मैंने आपको बांध रखा है. ये सपोज कर लो एक क्या रॉड है जिसको मैंने अर्थ सरफेस में हुक कर रखा है और ये आपका जो है स्ट्रिंग है. इस स्ट्रिंग से आपको बांध रखा है और आप क्या कर रहे हो, आगे की तरफ जाना चाह रहे हो. लेकिन होगा क्या, चूंकि ये लेंथ जो है ना फिक्स्ड है, दिस स्ट्रिंग लेंथ इज फिक्स्ड. यू विल ट्राई टू मूव फॉरवर्ड बट यू विल स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट लाइक दिस. Okay, we will start rotating like this. Okay, and the rotation is nothing but the clockwise direction. See, आप यहाँ पे हो, आप इधर force apply करो. You are the force. You are responsible for application of the force. And this is the string to which you are tied. And this is the point of application जहाँ पे आपको tie कर रखा है. ठीक है, तो आप अगर आगे move करना चाहोगे, you will start rotating about this point. आप कैसे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो. इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे क्लॉकवाइज मूवमेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट. एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एज पर आवर साइन कन्वेंशन. ओके, लेट अस सपोज द सेम प्रॉब्लम
But in that problem, let the direction of force is something like this. Let this is another force F dash whose magnitude is 20 Newton. Now you have to find the moment, again moment about A, but due to force F dash. In this situation again you can see the direction of force is this, but in backward direction. Again distance is perpendicular distance, shorter distance is 10 mm. You will get moment equals to 20 Newton into 10 mm, that is 200 Newton mm. But what about the direction? Let us see. मैंने क्या बोला बेटा आपको, ये एरो हेड जो है ना, ये आपका डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अभी ये एरो हेड जो मैंने रिवर्स कर दिया, दैट मींस आपका मोशन जो होगा इधर की तरफ होगा. ड्यू टू दैट फोर्स, you to apply this force you have to move in this direction, and when you try to move in the direction you will start rotating about this point A in this manner, in anti-clockwise manner, because this distance is fixed. Okay, you will apply force something like this after some time, then after some time you will start force applying force like this, and after some time you will start applying force like this, and you will start rotating in this on this circle. At every time the shorter distance is d, that is radius of the circle. Okay, but what we are interested in is the direction of the motion, direction of the movement due to this force, and clearly we can see the direction of movement is anti-clockwise, so there will be a negative sign. Okay, anti-clockwise will be taken as, anti-clockwise movement will be taken as a negative in our sign convention. Clear है? आई होप ये सिंपल चीज आपको समझ में आ गई. मैंने दो सिचुएशन डिस्कस किया, मैं दोनों को अलग अलग यहाँ दिखा देता हूँ. देयर इज अ फोर्स F equals to 10 Newton and the shortest distance from the point about which the movement is being taken is 10 mm. Therefore movement about A will be 10 into 10, that is 100 Newton mm. In the second example I have taken something like this. If this F dash is 20 Newton and again the shortest distance from point A is 10 mm, therefore moment about A, I am telling it dash because the force जो है, force को मैंने dash से denote कर रखा है. M dash A equals to 20 into 10, that is 200 Newton mm. But here there will be a negative sign. There will be negative sign because about this point it will create a clockwise movement, and about the same point this force will create an anti-clockwise movement. This will create an anti-clockwise movement like this. The motion will be something like this. In this situation, motion will be something like this. This is clockwise movement and this is clockwise movement and this one is anti-clockwise movement. I hope ये clear होगा आपको. ठीक है, थोड़ा सा और एक दो और एग्जांपल के थ्रू जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं. Let us take the same force F equals to 10 Newton, and this is the line of action of this force. Okay, and there is a point B, something like this. This time the shortest distance is not known. हमें एक्चुअली चाहिए क्या, अगर मोमेंट अबाउट बी हमें निकालना है, इफ वी हैव टू फाइंड मोमेंट अबाउट बी, देन यू नीड दिस डिस्टेंस. ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यू कैन से दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d perpendicular from B. This is shortest distance that d perpendicular from B, and moment will be what? Moment will be 10 into d perpendicular from B. But in problem this distance is not given. Suppose you have given with this distance. This distance. Here it is a point C. Suppose this point is C, and the distance is 10 mm over here, and this angle is given as 30 degrees. Now, if you have to find the moment about this point B due to this force equals to 10 Newton, and this is not given, the distance given is this one, then what you have to do? You have to find the component of this distance, that means this one. Okay, so you have to draw this perpendicular line, and this d perpendicular B will be nothing but hypotenuse into cos theta. Okay, this will be 10 cos 30. This distance will be, sorry, cos 30, this will be 10 sin 30. This will be 10 sin 30. Okay, from the trigonometry. Therefore, moment about B will be 10 into 10 sin 30. What will be the direction? Again, see,
this is the point of application, this is the point about which movement is being taken, and this is your force. You are moving in the right, forward direction, but due to this string you will start rotating about this way. See how you will rotate? You will rotate in clockwise direction, therefore it will be taken as positive. Okay, I am going to do the same problem, but this time the force is inclined one. Let this force is 10 Newton, and there is a point D. Suppose there is a point D, and this distance is given to you. This distance is, sorry, okay, this distance is given to you. This distance, okay, and this is the point of application. Here force is applied. Okay, this is the point of application, and this distance is given to you as this D equals to 10 mm. Now what will you do? Nothing else is given. You are given with this time. Here you are given with the angle of the length. यहाँ पे क्या आपको फोर्स का एंगल दिया हुआ है. सपोज करो ये 30 डिग्री दिया हुआ है आपको कुछ भी नहीं करना है. You have to resolve this force in two component. One is horizontal, another is vertical. This will be 10 cos 30 and this will be 10 sin 30. Now you take moment about this point D. Due to this force, this one, m about D will be 10 cos 30 multiplied by this much distance. क्यों? क्योंकि अभी क्या हो गया, ये जो component this is horizontal and the shortened distance is nothing but the distance given to you. That is 10 mm. This will be 10. And there is another component, this one. You can clearly see this force is passing through the point D. If you draw this force in backward direction, the line of action of the force will pass through the D. And there is an important point you have to remember. If any force passes through the point about which movement is being taken, then movement due to that force will be zero. कहने का मतलब ये बेटा, अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेना चाहते हो, तो उस फोर्स की वजह से मूवमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा. इसका रीजन क्या है? क्योंकि अगर वो फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट से क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सपोज देयर इज अ फोर्स F and there is a point C about which you are trying to take the moment. What will happen? This point lies on the line of action of the force. There will be no perpendicular distance between this point and this line of action. This perpendicular distance is zero. When you multiply the perpendicular distance with the force, you will get zero value. Okay? So whenever a force passes through any point and that is the point about which moment is being taken, then the moment will be zero. Clear? So you can see clearly this point, this force 10 sin 30 will pass through point D. Therefore, moment due to this point, moment due to this force will be zero. Therefore, net moment will be this much. And the direction will be what? Again, the direction is clockwise. We will take this at positive value. Clear? Okay. Let us take another example where the force is something like this. This force is 10 Newton and the point lies above, that is this one D, and this distance is 10 mm. What will be the moment about D? This m about D will be 10 into 10 because the magnitude of force is given as 10 Newton and the perpendicular distance is also given as 10 mm. Therefore, moment will be 10 into 10. That's clear. And what will be the direction? Try to rotate the force. Hold this point and this force will trying to move forward in the direction of application of the force. But what will happen? Since this distance is fixed, it will start rotating like this. And the direction of rotation is what? Anti-clockwise. So there will be a negative sign. I hope movement जो है आपको clear होगा. अभी जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे बेटा ना इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे, तो कुछ बातें और क्लियर होंगी मूवमेंट के बारे में. ठीक है, तो आई होप कि ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन मूवमेंट का जो था आपको क्लियर होगा. ऑलरेडी हम लोग मूवमेंट के बारे में बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में, 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, हम लोगों ने प्रीव्यू किया उसको. ठीक है, मूवमेंट को. तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे ना ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, तो और सारा क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. बिफोर टेकिंग एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम. जैसा कि हमने देखा था बेटा, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम केस में क्या था, आपको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या थी? समेशन ऑफ fx 0 समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0. समेशन ऑफ fy इक्वल्स टू 0. ये दो इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम थी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में.
बट कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के केस में एक इक्वेशन इंक्रीज हो जाएगी एंड दैट इक्वेशन इज नथिंग बट समेशन ऑफ m अबाउट एनी पॉइंट इक्वल्स टू 0. Apart from these two equations, there is another additional equation which is moment about any point equals to 0. For a body to be in equilibrium under action of non-concurrent force system, all the forces about x-axis, all the forces about y-axis, that is sum of all the forces about x-axis, sum of all the forces about y-axis along y-axis must be 0. Apart from that, the moment should also be 0. Why moment should be 0? If moment is not 0, the particle, the object of interest may not move in x direction, may not move in y direction, but it may rotate. I mean to say, अगर बेटा यहाँ पे किसी रिजिड बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, देन समेशन एफ एक्स 0 तो है, समेशन एफ एक्स इज 0, समेशन एफ वाई इज 0, बट क्या आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है? कभी नहीं कह सकते. दिस ऑब्जेक्ट विल रोटेट बिकॉज दिस फोर्स इज फॉर्मिंग अ कपल. ड्यू टू दिस कपल दिस ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट रोटेटिंग. ओके, सो इफ दिस ऑब्जेक्ट इज टू बी इन इक्विलिब्रियम, this must be 0, this must be 0, and the moment about the applied forces also must be 0. That's why in case of non-concurrent force system, an additional equation comes into existence, that is moment about any point must be 0. Okay, so with this brief introduction about movement and equations of equilibrium for coplanar non-concurrent force system, we are going to solve some problems which, let us take an example. Suppose there is a member, horizontal member, something like this. Okay, it is resting on a pillar. It is resting on a pillar. This member is resting on a pillar, on two pillars. This pillar name is A and this name is B. Suppose a load is applied over here. Suppose a load is applied over here of 100 Newton, and the distance, this distance is 2 meters. This distance is 2 meters. Suppose this distance is 3 meters. Okay. This point is A. This point is B, and the load applied is at a distance of 2 meters from left end and at a distance of 3 meters from the right end. That means its span is nothing but 5 meters. Okay. You have to find what will be the reaction due to this pillar and what will be the reaction due to this pillar on this object. To understand that, we have to draw the free body diagram of this object. Let us draw the free body diagram. So, what do we know free body diagram? Free body diagram is a diagram of object of interest with all types of forces acting on that object. Okay, so let us see what are the forces acting on this object. This point is A, this point is B. There will be a RVA and RVB. These are the reactions. These are the reactions on this member due to these two pillars. Why in upward direction? Because this member is pushing the pillars in downward direction. So the reaction force will be in upward direction. Newton's third law, action reaction pair. Apart from these two reaction forces, there is a applied force that is 100 Newton. That is 100 Newton. This distance is 2 meters and this distance is 3 meters. Okay. Now we have to apply the equations of equilibrium for coplanar non-concurrent force system. First one was summation of Fx equal to 0. Since in this free body diagram there is no horizontal force, so this equation will be not used in this problem, particular problem, because there is no horizontal component of the force. तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, तो इस इक्वेशन को मैं यूज नहीं करने जा रहा है. देन सेकंड इक्वेशन इज व्हाट? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0. समेशन एफ वाई 0 मतलब क्या? हम लोग क्या करेंगे बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव वाई की तरफ जो लग रहे हैं फोर्स उनको पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव वाई में जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हम लोग नेगेटिव लेंगे. तो देखो बेटा, पॉजिटिव वाई मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस हैं? आर वी ए एंड आर वी बी. तो हम क्या लिखेंगे? आर वी ए प्लस आर वी बी minus of 100 equals to 0. Therefore RVA plus RVB equals to 100. This is your equation number 1.
Okay, now you have to draw you have to use the last equation, that is moment about any point equals to 0. I am telling you moment about any point must be equals to 0. That point may be A, that point may be B, that point may be this point, and that may be any point or any point on this part, this member. But for sake of simplicity or for sake of easy calculation, we always take moment about that point through which maximum number of unknowns passes. तो अब देख पा रहे बेटा, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, दोनों से एक एक अननोन पास हो रहे हैं, दैट इज आरवीए एंड आरवीबी. तो हम लोग किसके अबाउट मूवमेंट ले लें, ए के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं. ठीक है, बी के अबाउट भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग किसके अबाउट लेंगे, ए के अबाउट. व्हेन यू टेक मूवमेंट अबाउट ए, व्हाट विल हैपन, सी दिस आरवीए इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट जिसके अबाउट हमें मूवमेंट लेना है. ये आरवीए उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसके अबाउट मुझे मूवमेंट लेना है. तो इसकी वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देयर विल बी नो मूवमेंट ड्यू टू आरवीए बिकॉज दिस आरवीए इज पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट अबाउट विच मूवमेंट इज बीइंग कैलकुलेटेड, दैट इज पॉइंट ए. नेक्स्ट फोर्स इज व्हाट, 100 न्यूटन. 100 न्यूटन मूवमेंट इज 100 न्यूटन force is at a distance of 2 meter from A and it will produce clockwise movement. Okay, something like this, something like this. Then you will write something 100 into 2 clockwise, so it will be positive. Then next force is RVB and this is at a distance of 3 plus 2 total 5 meter. यानी कि जो RVB है A से 5 मीटर पे है and this force will try to move like this, but it will not move in this direction. It will start rotating something like this because this distance is fixed. Okay, it will try to rotate in this direction. So there will be an anti-clockwise movement due to this force. What will happen, RVB into 5 equals to 0. Okay, therefore RVB will be nothing but 200 divided by 5 equals to 50 Newton. Sorry, 40 Newton. 40 Newton. Okay, you put this value of RVB in this equation, you will get RVA. You will get RVA equals to 600 minus 40, that is 60 Newton.